थोड़ा सा एक और ले लो अप एंगल, बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज फाइन इनफ टू हैव ए कन्वर्सेशन, मेकअप, लाइट, कैमरा, एक्शन, बहुत बढ़िया, है ना। चलो ठीक है, 7:30 बज गया है। तुम लोग 12:30 तक तो मेरा दिमाग खाने के लिए तत्पर रहते ही हो। शाम होते ही, शाम बीतते ही मुझे लगता है तुम लोग को मेरी याद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आने लगती है, क्योंकि शाम तो शाम है ना भैया। दिन भर तक तो तुम लोग राजसिक काम करते हो, राजसिक स्लैश तामसिक, है ना। राजसिक काम करते ही इसलिए हो कि फिर रात्रि में तामसिक सुख मिले, ठीक है। तो वो राजसिक ही तामसिक है, नई उपनिषद लो छोटी सी, ठीक है। उपनिषद आजकल मेरा उपनिषद पब्लिकेशन अलग ही लेवल पे है, ठीक। खैर इसी समझ में आ गया हो तुम लोग की फॉर्म में हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट के 60 सेकंड होने के पहले ही जब मैं एक उपनिषद मार दूँ तो समझो कि मैं फॉर्म में हूँ। फॉर्म में नहीं, अल्ट्रा फॉर्म में हूँ, ठीक है। बहुत दिमाग ख़राब किया तुम लोगों ने कल मेरा, ठीक है। बट कल नहीं, कल थोड़ा कर रहे थे। तो नेक्स्ट लेवल जो है उसका, सेकंड लेवल के दिन वाली जब जो ऑप्शन है उसमें पहले दिन तुम लोगों ने परेशान किया मुझे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं तुम लोगों को गुड न्यूज़ दे दूँ कि मैंने 12 घंटे में सारी तैयारी कर ली है अपनी, तुम लोगों से अगला लेवल पर निपटने के लिए, है ना। इस लेवल में आई थिंक बड़े मुद्दे आएंगे अब, ठीक है। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं चलती है हमेशा, ठीक है। तो वट एवर लाइफ विल थ्रो वी विल डिफेंड एंड बैट, ठीक है। तो ये हो गई बात, 100 सेकंड के अंदर ये बोल दिया। अब मैं लूँगा विश्राम, मैं पीऊँगा कॉफ़ी, तुम में से जब कोई आया बोलना तो फिर शुरू करेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी लाइव आ गए हैं क्योंकि आई डोंट नो, कुछ होंगे रीजंस, मुझे नहीं पता आगे पीछे कैसे फैक्टर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं उतना ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो मामले पे एक सर्टेन निगाह बना के मैं रखे हुए हूँ, शायद दिख जाए तुम लोग को। ये भी है, इट्स दैट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इसको भी देख सकते हो, क्या देखना चाहोगे, ये देखना चाहोगे या फिर ये देखना चाहोगे, मैं दोनों दिखा सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। एक और है बगल वाला, है ना। ये तो अलग ही, और तो यू ऑल कैन चूज, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई कैन शो यू वट एवर यू लाइक। एक तो हो गया ये काम, साइड में खोल लेता हूँ मैं द इकोनॉमिस्ट और निस्काम निस्काम 17 फाइटर जेट का डिज़ाइन। आज पे थोड़ा काम शुरू हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एलॉन मस्क एंड टेस्ला बनने वाला हूँ। मामा सर फुटबॉल इज़ द डेविल। हाँ तो सही तो कहा ही था मामा ने, मामा वॉज राइट, मामा वॉज एब्सोल्युटली राइट, फुटबॉल्स आर द डेविल। Srini Bidon said hi. I also said hi. Hello. ये तुम देवो ही तो नहीं हो? नहीं, someone else. Yeah, you all can continue. Hi, hello. How are you? So the basic framework is that you initiate a conversation and then I respond and then the whole conversation flows on. It's nothing thematic as such. Whatever you are feeling about, what's your channel about? I largely do energy work, or you can say wisdom work. I try to increase execution in individuals' life. है ना? Basically, individuals who are feeling a little bit unstuck, who are not properly focused in their life and so on. Workout, no, not as such. I am not very. I can talk about why you are procrastinating or why you are not that much consistent in your workout and so on, so on. What should be your motivation behind workout and so on, so on. Workout specifically as such is not my main theme, is not my primary uh, theme of conversations. I am ready for the rapture already. Rapture mean what? Essentially whatever you are feeling confused about, whatever you are feeling, wherever you are feeling anxiety, you are not feeling a sense of, what is the truth behind discipline. Discipline essentially comes from looking, observing cleanly. Once you accurately accept yourself,
Okay, the key to have consistency or to have good discipline ultimately comes from honesty, being completely honest about it. If you know that you have a tendency to indulge or to avoid or procrastinate or whatever it is, if you know that you are actually not that much focused, so the discipline ultimately starts from there. First of all, accepting, no, I don't play Free Fire. No, bro, no Free Fire, nothing like that. So, first of all, you accept that you are not that much disciplined. Okay, wherever you are, you meet yourself wherever you are. That's the uh, key principle essentially. And then we move forward obviously in terms of data capturing. So data capturing ultimately, I generally have a few tools or frameworks which I use, in which generally a simpler version of data collection will take place on you, and then averages will come, and then from there we will see fluctuations will also recorded, and then we will see that there are certain forces which are putting your consistency down, and there are also some forces which are also pushing your consistency upwards as well. What's the difference between motivation and discipline? Motivation is actually not a theme of mine, to be very honest. I am more of a clarity kind of person instead of discipline or motivation. Motivation is it's like motivation doesn't really work. As I generally say, with motivation you might cover another 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Let's say in example of running a marathon or anything like that. But with clarity, you will go 50 kilometer, 500 kilometer, whatever it is. Your maximum potential is not unlocked by motivation, but by clarity. Motivation works, no doubt it works, but it's a very inefficient uh, tool ultimately in the long run, specifically, and specifically when complex issues are at play and we have to deal with a larger group. Motivation is not the solution of motivation is not the path to greatness. The individuals, I generally like sports a lot, so elite sports persons are not elite sports persons are ultimately, I feel, very honest individuals. They're not the most motivated individuals, but they're very honest individuals. They know what their weaknesses have been, and then they work upon them ruthlessly, and out of that they gain strength. Obviously everyone have a certain amount of strength, and that's how they become elite. That's how they become top 1, number 1, number 2, number 3, top 10, and so on, so on. So I feel like that in a sense playing sports is generally a very uh, good way of inculcating discipline, because ultimately in one way or the another, if you stay committed to sports, what will happen is that you will realize that what works and what doesn't work. You will realize that after losing, let's say, 10 to 20 games, whatever sport you choose, you will understand that how much the motivation actually really works. Getting? So, in a sense, a good commitment to playing sports, any sport, whatever you like, cricket, football, badminton, tennis, whatever is easily available to you, whatever you can play on a frequent basis, I feel is a very good starting point. Consistency is key for success, motivation is not. Yeah, but consistency comes from, first of all, understanding that we as individuals or we as human beings are not completely designed for consistent performance. We have bad tendencies, we have tendencies for indulgence, and the environment has also been designed in such a way that we become easily indulged and easily disciplined, and so on, so on. So these kind of factors also go a long way in terms of ensuring consistency. Ultimately, everyone knows after a certain point, if you are even decently honest in your life, you realize that consistency is the problem. Individuals who are average or a little bit above average, they understand it very clearly that main problem is consistency. But where the difference between above average and the elite is that the elite knows exactly why he doesn't
perform consistently. What exactly is the root cause of his inconsistent behavior, or how the inconsistency creeps into his system, into his routines, and so on, so on, so on. And a lot of it is more about designing your life or your space in a proper way. Thereby, obviously, that's why there are national academies for sports. Or oh, no. Waking up at 4 tomorrow is not a very big deal and not a very good way. I feel like that just having a good commitment to playing a sport which is easily accessible to you, I feel is the more correct way to go about it. Rest everything is okay. My niche. I have been involved in various things. I have played a decent amount of football in my life. I do have I have developed some interest in cricket as well. I will show you. You can see that there are bats and all, and there is guitar as well and so on. So I am a diverse kind of individual. I have some diverse interests, but you can say that execution is to a certain extent my niche. I try to help individuals go beyond average behavior or average performance, whatever their field is. In a sense, coaching, you can say performance coaching, execution coaching, whatever term you wanna use. I like to um, help individuals change their leagues, not just perform good in their league itself, but to go beyond their league, go into the next level league. That's what my niche, I guess, should be. I think that very well describes what my niche is. Wherever you are in your life, in whatever league you are right now, obviously there is always a lower league and a higher league, unless until you are in the elite league itself. But if you are in the elite league, chances are that you and I will not be interacting. So that's the case. You can play the guitar. uh, Actually, I have bought it only a few days back, 20 days back, so I can play it a little bit. You want me to play? Actually, as you move forward in the journey of excellence or so on, so you do need a certain relationship with sports and music, because it helps you channelize your subconscious a lot and so on. Well, let me give it a try. I certainly play, can't play it very good, but I'm just playing it right now with my hands. I do have a plug, but I can play it a little bit more complex as well than I have played it with the plaque and so on, with some sort of melodies. But my journey has been very, it has not been very heavy. It has only been 20 days. I will be very honest with you, but yes, at least I do feel that the spying itself has, and in the last 20 days, I do feel that it has played a good role, and I do expect it to play a good role in the overall, as the whole year will pass, as one full year will pass. I'm pretty much sure that I will gain something which I might not have gained very easily without this one. So a 2000 rupees investment, I do feel goes a long way, because ultimately, more than purchasing, it's regularly playing it.
just keep it handy, just beside me, so that I can play. And specifically, being the rainy season, I am pretty much sure that I will enjoy it a lot. So that's it. Before this, I had actually bought piano. This is, you can see it's. So I had bought the piano before this, but what happened with the piano ultimately is that it is electronic, and then you have to adjust, and then there has not been a very good place where I can place it, and so on, so on. It has not been very much handy as the guitar is, and obviously is not that much portable as well. So I have found ultimately that it didn't integrated that easily in my routine and life. So I went for a more portable, more accessible musical instrument, and I have found guitar satisfying that thing for sure. And out of that, I am pretty much sure that I am at times I am able to channelize my inner energies, conflicts, and so on through the guitar. What happens is that if you are feeling low, or if you are feeling a little bit vague or confused or whatever it is, which happens, art is also a way to go about it, to go through it. You just start drawing, and then whatever is in your subconscious slowly starts picturing itself on the paper. So those are the kind of things. You just go to the park and then you just bowl, or you just bat. Doesn't matter. First of all, you play some bad shots, you throw some bad balls and so on, and then ultimately you start finding rhythm. You talk so well. I think you should invest in good camera. It will help you. I do have the laptop actually. I do have the laptop, but it's like that. At times I come through mobile, because of portability and ease of access. So I do both ways. I do have a proper professional camera as well. So it's not the case. Apart from that, if you want to connect with my systems more, then you will have to send me an email. I will connect you with some of my frameworks or tools that I use. Or if you don't want to go that far, still you can just continue coming on my channel. I almost come daily, interact with me, and then we can see where it goes. So that's that. Now you say. Then the conversation will continue. I also teach Gita and all, so there are a lot of stuff. Generally on my channel, two kind of individuals come. One who just come and then go, and come and then go, and then there becomes, out of those, what happens is that out of that, some individuals stay for longer and deeper set of conversations, and they start then they start aligning with my overall routine, life perspectives, and so on, so on. I am from Uttar Pradesh, Kanpur. What's your channel theme? My channel theme is largely execution, helping you execute better in your life, change your league, perform better, move from average to more excellent or more elite performance, and so on, so on. Largely, you can say execution or performance coach. Coach, you can say life coach, productivity coach, whatever you want to call it, relationship coach, and so on, so on. What are you looking for? By the way, this one, Article 112 is very much important. I do feel that, wait a second. Like I have this one here, Constitution of India. I do feel that the kind of demographic dividend that we have, it's very much important for us to invest time in reading the Constitution itself. Okay, because only after that we can be politically creative, which is certainly needed, which is certainly a part of again execution, leaks, and all those kind of stuff. Do you believe in God? A tricky question. God in the sense what? I believe in infinity. I believe in Jiddu Krishnamurti. Have you heard about him? Like, I do have Gita, by the way. I can even teach you that. In fact, I do have a lot of videos on that front. So I do believe in Gita, by the way. I'm not sure. सगुण निर्गुण बहुत सारी बातें हैं, है ना. It's like it's a too diverse topic.
ऐसे यूपीएससी में फिलोसफी का जो ऑप्शनल होता है उसमें है ना, देयर इज़ अ वन होल बुक, उसमें एक चैप्टर होता है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड एंड फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सो ऑन. So it's too vast a topic to give a simple yes and no answer. I do feel though that knowing constitution is certainly important. God may or may not be optional, but constitution is certainly not optional. Sports and music and art are I guess probably certainly not optional. Because at the end of the day, you have to live through those things. And there are many things. It's like that I generally hold a very open-ended conversation. You start wherever you are, wherever your confusions are, and so on, so on, and I can then start pulling you in the right direction, in the right frame of minds and the perspectives, and so on, so on. And that is also one way of me increasing your execution, increasing your productivity, and so on, so on. And then ultimately there are totally different set of tools and frameworks which I have developed over time. But that's again up to you, how much you want to integrate and so on. I don't believe in God. That's why I asked you. Gita is just a life lesson book. Have you read it? That's the main question. Much like Constitution of India, do you know about? Do you have any interest in politics? Generally, girls don't have. Again, there are various reasons behind that. Uh, the main point is that individuals actually have not read Gita, but they do have an opinion about it. That's the problem. But that's a so prevalent problem that I can't really complain about it. Ultimately, this has to be solved, and which only will be solved if we actually read it. Believe it or not, follow it or not, that's another matter. Actually read it. In a very small sense, I can tell you that it's not about action itself, it's more about the actor. That's the difference which at least you should take away. Do you know who is Gokes, Magnus Carlsen? I know them. I follow chess, I play chess. You can send me a friend request, Vivek11x on chess.com. My rating is 173, rapid. Blitz, I guess. I mean, roughly 1000 plus. I like Scandinavian defense and English opening specifically. English opening, Sicilian defense, and so on, so on. In fact, I can show you something. You will like it. How about this one? So I do have 5 whiteboards dedicated to them. So chess is a decent part of my lifestyle. So take. Right now, I am trying to become better at gaining space, Rui Lopez and Catalan opening, which are very much positional, very slowish kind of, in which you gain advantages slowly, and your opponent loses it slowly, much like Sicilian defense as well. So there are some like E4 openings are very fast, right? Something boom bam happens and so on, so on. So that's the case. D4 are a little bit more stable, and then ultimately C4, whether it be English opening or the like even in the Catalan, you ultimately play D4, C4, so it's not that much different. English opening or Catalan or Rui Lopez, these are very, long type of games, slow positional games, and so on. So we can talk a lot about it. I want to study Rock Solid Chess book by Sergei Tevyakov, 3 books series. I had already played it, so don't make me play it again and again. You tell about yourself. I do a lot of stuff, but that's not the theme of this channel. I am not here to brag about myself or excessively speak about myself. Obviously, it's not a chatting or gossip kind of channel as well. It's okay, you can have a certain amount of conversation.
You're just a girl. Uh, I might not agree with that, or Ashtavakra Gita might not agree with that. Have you heard about Ashtavakra Gita, Bhagavad Gita, Ribhu Gita, and so on, so on, so on, Avdut Gita? There are various type of Gitas available. Upanishads. You want to be part of bigger frameworks? You want to connect with me more deeply? Again, your choice. For that, obviously, you will have to give me your email, and then I will send you many links and so on, so on. If not, that's okay as well. Fine, no problem with that as well either. सुलह है Hopefully you are not typing your email, because that will not, it will not take here. One question, ask me three. Ask me three. Can you sing? I see where it is going. Ask me second question. No comments. I do have a eco dot, by the way, so I do listen to some songs from time to time. I had listened to Bombay Nagari and Victory Anthem and Satyam Shivam Sundaram today. All three very different kind of vibes, including the Razi title track. I like Razi movie songs a lot. The overall theme of the songs, the overall theme of the movie, I really like it. I like the theme of putting nation above personal interest generally. Messi or Ronaldo, Messi. Messi or Ronaldo, both ways. Excellence. Messi or Ronaldo, excellence. Both are champions. Both are champions, no doubt about that. Messi is a different beast, Ronaldo is a different beast. Both are champions. Both are equally champions. Depends upon where you are seeing. Both are champions. Equal champions. I see both of them way above me. That's the way I see. I don't compare because I don't feel that I have developed that kind of dedication or focus. I would love to, but I have not, certainly. But it's okay. I have had my fair share of struggles and focus and so on, so on. So I see both of them as inspiration instead of things of comparison. So that's my response. Third question. By the way, I can show you the one thing. That might answer your question as well. That might answer your question as well. No, actually, Ronaldo plays in those kind of setups in which he is the scorer. Ronaldo actually plays in that kind of setups or formations in which he is the sole scorer or the main scorer and so on, so on. It's far too complex. Okay, if you are a football manager, then you will understand it. I understand where the question is really coming from. Both are very different systems. Messi has played in a very Barcelona kind of system, which is based on teamwork and so on, so on. You will have to play it. You will have to play it to understand it. And both have very different kind of strengths as well. That's why their roles are different. No, competitive sports, specifically football, and at that premier level, is not geared for an individual.
individual or the player will have to gear or adapt to the overall framework. What's my name? That's interesting. So the name, my name is, what's my channel name is? My name is what my channel's name is. You are being too curious, which means nothing. No, that's my handle. Now I got it. How to proceed. So, do you have any understanding about climate change or biodiversity loss or economic concentration, demographic dividend, or um constitutions, and so on, so on? Do you have any understanding or interest about these topics generally? What's your age, by the way, and birthday sign? Me, January 11th, Capricorn. Me, sharing birthday with Raul Dravid. Sala- कर लो टाइप 1 2 3 4 5 6 पौने 8 बज रहा है ना क्या है इस पे दिक्कत क्यों फ़ोन कर रहा है कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं तो कर क्यों रहा है Done. Curiosity done. Sorry, bro. You look very serious kind of person. I don't have any knowledge about them. I know the zodiac sign, but I don't believe in it. No problem. Thankfully, our roads ultimately merge somewhere where we can ultimately make a decision. Yeah, I am what I am. My interests or my themes or my focus or my concerns are what they are. I'm not going to change for them. I'm not asking you to change yours for mine as well. So maybe that's all. That's all the interaction that we might have had with each other. No problems with that. The world is too full of individuals to have interactions. You will find yours, I will find mine. Literally no problem with that. If you're done, you may proceed. Little rude? Maybe. Why not? साढ़े सात एयरटेल लैपटॉप मोबाइल टीवी DTH एयरटेल ब्लैक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन मिनिस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हेलो बताओ तुम्हारी सहेली भी आई हुई है सहेली को हाय बोल दो प्रिया चोपड़ा को हाय बोल दो प्रिया चोपड़ा को हाय खैर डजंट मैटर बताओ आगे You are really awesome. You can play chess, guitar, have good knowledge about things. You should too. है ना बाकी तो फिर एक मिनट आते हुए वापस हाँ आ जाओ एक पानी पी लो कोई दिक्कत नहीं है अभी भारत में पानी है नदियों में पानी है अभी सारे हिमालय ग्लेशियर नहीं पिघले हैं
जो पहले बाढ़ है उसके फिर सूखा है, तो जब तक पानी है तब तक पी लो, है ना। जब तक फ्रिज में, डू यू नो हर मीन्स अर्पिता? No hurry in the sense what? There are many viewers who come often, who have had a fair share of conversations and so on. So obviously I know her. Now I am getting confused a little bit. Her is who? Priya Chopra, Arpita, or who? What are you looking for in your life? That's the main question. I have no problems. I have no problem in terms of having conversation with you. You are just a girl. I am serious kind. You are not serious that kind, and so on, so on. What are you looking for generally in your life? Because that will ultimately determine how long our conversation will be, which I certainly don't want to know beforehand. I am okay with the unpredictability or uncertainty of that, but my job is to keep pulling the conversation in the right direction. As long as I am a part of it, or as long as you are also willing to be a part of it uh, with a certain sense of ease. I'm looking for nothing, I am just chilling. Got it. Nice, fine, no problem. You are looking for nothing, you are just chilling. Fine, no problem with it. Tell me something. Tell me 4 or 5 things, whatever is on your mind. Or you might also choose silence, that's also fine. At the end of the day, you will do one thing or the another. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है बिना you say my personality is that I slowly start covering the ground around a story, around an individual and so on. So I'm doing my job. I am doing my job. You haven't told yet where are you from. You have not told yet where are you from. Looking for nothing, I'm just a girl, not a serious kind of person. I know the sign but I don't believe in it. You see, you are from Haryana. The district? Which district? I generally ask it. It's a routine exercise for me so that I get a certain glimpse of it, that who I am talking to and so on, so that I can talk around it at least. Obviously, there are two parts of Haryana. One is in NCR and then there is another non-NCR. Age? What's your age? What are you generally doing in your life? A student, job or anything like that? बोलो. आपने तब से अपना आओ मिला देते आओ. कम. तब से हाँ पता. इसको जानते हो कौन है? अपना नाम बताओ. अनय. अनय. तुम टॉरस हो क्या? नहीं. टॉरस नहीं हो तुम? नहीं. तुम्हारा बर्थडे कब होता है? वो तो मुझे नहीं पता है. 26 अप्रैल को होता है. कब होता है? 26 अप्रैल को. 26 अप्रैल को होता है. हाँ. आई कांट टेल यू माई एज. 27 है क्या? नहीं. कंचे पारी. 4.5 साल का हूँ. 4.5 साल की हो बस? कब पैदा हुए थे? 10 दिन बाद. बस 10 दिन पहले? हाँ. नो प्रॉब्लम. ठीक. क्या खा रहे हो? बिस्किट. चलो ठीक, खा लो जाके फिर.
पार्ले जी हाँ खा लो ठीक ठीक आगे बताओ गुरुग्राम दैट्स नाइस डीएलएफ सिटी क्या तो बोलते हैं उसको मैं भूल रहा हूँ कुछ तो बोलते हैं यार उसको मैं भूल रहा हूँ यूआई डीएलएफ और वो सब है वहाँ पे साइबर सिटी hopefully you are working there in case that's the case that's good you are at the right place then just we shall see I am not differentiating as such between metro and non-metro or rural or urban or anything like that anyone who is willing enough to walk with me is welcome as long as you are walking because I keep walking I don't stop I just keep walking being a good Capricorn I keep walking that's my way of life and I will not change it I have not changed it I won't change it I can't change it I don't want to change it as well how old are you that's a non-relevant question that's a question that is not that much relevant right now I can answer it but since you are not answering many of the questions I feel okay not answering a few and again that's this channel is not about I have not came on the YouTube live so that everyone can know about me I am here to talk about other individuals what's happening in their life helping them out to a certain extent or inspiring them or whatever I can do good in their story and knowing my age doesn't really solve that or doesn't really serve that purpose so I will hold my ground. I will hold my ground. Ultimately, individuals only have two choices on my channel. Either they come along with me or they stay wherever they are in their zones. I am okay with both of them. But I will hold my ground. Okay. No army can stop the idea whose time has come. Victor Hugo. You know about him? दिख नहीं रहा होगा. Give me some advice about life. Respect data. Have a love for data in your life. In your conversations, whenever you are reading, whenever you are speaking, whenever you are listening, in all form of communication, try to have a data driven conversation. इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा में रैंक कितनी है? इंडिया की एसडीआई में रैंक कितनी है? केंद्र सरकार के बजट का कितने परसेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिलता है जनरली? कितना बजट आता है? केंद्र सरकार का बजट कितना आता है ना? डेटा ड्रिवन अप्रोच. ठीक है. हैव अ रेस्पेक्ट फॉर एवरेजेस इन लाइफ. एवरेज इज अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ डेटा. Data and average ultimately will lead you more closer to truth. Truth will ultimately set you free, and when you are free, then you can do a lot of good things, not only for yourself but for others as well. And that's all that. That's not all that. That is certainly a possibility that is open for every individual, है ना. And then there are so many individuals in India itself. 140 करोड़ तो भारत में ही है ना. प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ अभी तो एनर्जी भी बहुत है ना. अभी भी 10 साल ही करीब आगे बढ़ा है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड. 20 वाले 30 के हुए हैं, है ना. अभी हम लोग 30 से 40, 40 से 50 के नहीं हुए. तो सो वी स्टिल हैव टाइम. आई डू फील दैट इन द लास्ट 10 years वी हैव certainly not benefited from the demographic dividend as much as we should have, but still the boat has yet not sunk. We can turn it around yet, but the time is certainly narrowing down, no doubt about that as well. बताओ 1 मिनट कितना पानी पीती हूँ. पानी H2O बनाने लगी थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के.
कॉल आ गया था, कॉल तो उठाना ही पड़ता है, हमको भी एयरटेल वाला 2 बार कर चुका है। खैर कोई बात नहीं है। स्पिरिचुअल कृष्णा जी का कॉल आ गया था, हिमालय से कॉल आ गया था, उठाना ही पड़ा। कैसे तो वो गाना है ना, क्या नाम है, आ, अरे कैसे गाना था यार वो, मैं भूल जाऊंगा, तुमने जरा की बोला तो भूल गया। देखो मैं हल्का सा आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी है ना, तो उठाना ही पड़ा सजना, जालिम है कॉल की घड़ी। तो खैर चलो, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आई कैन सिंग। तो कानपुर से आया था, बहुत बढ़िया बात है। पापड़ बेले बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया ही बेल रही है, सारा मिडिल क्लास बेलता ही है पापड़, और क्या करता है ना, पापड़ बेलता है, फिर उसको पापड़ बना के बेला जाता है। सो दैट्स द फेट दैट वी हैव। योर फ्रेंड इज़ बैक, आई थिंक आई शुड गो, यू कैन गो, बाय। जाना ही पड़ा सजना, those who want to go they go, those who want to come they come, those who want to stay they stay. I hold my ground, everyone else chooses their choice, makes their choice, तथास्तु। जाना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लड़ी, ना 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 ना। 22 जून 2025, 25 मिनट देखकर लाइव में प्रवेश पा चुकी हूँ। यहाँ से होगी कहानी शुरू। 10 दिन के बाद आएगा एक मोड़, 20वें दिन तक क्या मैं अटैचमेंट गेन कर लूँगी? मैं किससे कह रहा हूँ, तुम में से तो किसी नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली, है ना, या फिर ये ज़्यादा ही गीता पढ़ने वाला है। बट असली में कहाँ ही कोई करता है ना, ये तो बस दिखाऊ बातें हैं। गीता रख लो बगल में, उससे है ना असली में थोड़ा निष्काम कर्मयोगी बन जाता है कोई, तो अटैचमेंट हो ही जाएगा। तो यानी कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं तुम में से तो किसी नहीं कह रहा हूँ, आई गेस नहीं कह रहा, तुम में से तो किसी नहीं कह रहा हूँ सर्टेनली। ठीक है, तो और बताओ फाइटर जेट के बारे में क्या क्या पता है, किसी कुछ को फाइटर जेट पता है? मैं फाइटर जेट बनाना चाहता हूँ एक, लिटरली मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने 3D डिज़ाइन वगैरह शुरू कर दिया उसका, निष्काम 17 उसका नाम रखा है मैंने, F-17 के है ना भारतीय वर्जन के हिसाब से। आज मैंने उसी प्रोसेस में 3D डिज़ाइन वगैरह, मुझे कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है। इट कीप्स मी इंगेज, इट फिल्स द वॉइड। नीरज पेप्सू दिल में बस से जाने, बस गए भाई, तो अब है ना आधार कार्ड ही बनवा दो, है ना, पता बदलवा दो। पैन कार्ड वालों को भी क्या, तो NDSL नेशनल है ना, NDSL बनाते ही नहीं पैन कार्ड, ऑनलाइन पैसा देना पड़ेगा उनको भी। हे इट्स मी अगेन, हे इट्स मी अगेन, व्हाट ए कोइंसिडेंस। मोदी जी को भी ऐसा लगता होगा ना कि यार फिर वहीं आ गए भारत में, बार बार हिलो को स्पीच देनी पड़ती है, लगता होगा नहीं लगता होगा? आई डू फील कि उनको लगता होगा कहीं। भाई मर गया वो, उसके गुणगान गाने बंद कर दो। अच्छा ओ, हाउ इज़ योर डे मैन, इट्स स्टिल पासिंग बाई, ओनली 8 PM, इट हैज़ पास्ट बॉन, इट हैज़ गॉन पास्ट। भाई द वे भाई, इजराइल वाले और ईरान में लगी बवाल चल रहा है। मैं समझ गया हूँ, आइदर आई एम गना मेक मिसाइल एंड किल अदर्स, और अदर्स आर गना फायर ए मिसाइल ऑन मी। मेरी मौत TB डेंगू मलेरिया से नहीं होने वाली है। जितने जिंदा हैं 800 करोड़, इसमें से ये सब साले मिसाइल से मरेंगे। टेंशन नहीं लो, है ना, यू आर नॉट टॉकिंग टू द सेम पर्सन, है ना, बाकी तुम कोशिश कर लो, आई अंडरस्टैंड।
है ना. आई नो व्हाट आई एम, आई नो माई गेम, है ना. इफ़ आई वॉन्ट टू रीड बुक, हाउ शुड आई मोटिवेट माई सेल्फ. अरे पुराना क्वेश्चन, ये ऐसे बहुत मिलते हैं. इसका छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ ना. इट्स इज इट ओके इफ आई टॉक इन हिंदी. अरे ईरान भैया, ईरान वाले इसराइल वाले अलग ही ठोके पड़े. यूएस ने भी मार दी 3-3 मिसाइल. यूएस ने भी 3 मिसाइल मार दी भाई. ट्रम्प भाई अपना अभी सबको रोक रहा था, कहता तुम सब रुको, मैं मार के दिखाता हूँ मिसाइल. तुम सब लोग डी एस्केलेट करो, मैं एस्केलेट करता हूँ. तुम लोग मिले नहीं अभी तक जेमिनाई से. तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही हम लोग जेमिनाई कहा जाता है? हम लोग को ऐसे टू फेस बोला जाता है ना. भाई मेरा एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है, यू कैन ज्वाइन मी इफ़ देर इज़ एनी न्यूक्लियर वार इन फ्यूचर. अरे ये एयरटेल वाला एकदम ना, जब तक मैं इसको उठा के आई लव यू नहीं बोल दूँगा कि हाँ आई एग्री, मंजूर है ना, मंजूर मंजूर मंजूर, आओ शादी कर लो, तब तक कि एयरटेल वाला साला कॉल करता ही रहेगा, मैसेज भेजता ही रहेगा, भले इंटरनेट आ गया हो. पता नहीं किस तरीके का सिस्टम है, फीडबैक भी नहीं ले पा रहा हूँ खुद से, है ना. ऊपर से हमने मोबाइल से लाइव ऑन कर रखा है. तो खैर, तो ये हो गया. न्यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वॉर सर. वॉर इज़ अ सिम्टम, है ना. देखो दो ही चॉइसेस हैं, या तो तुम स्पिरिचुअल क्लैरिटी गेन करके नॉन वायलेंट बन जाओ और सिस्टम्स को भी बना लो, है ना. अदरवाइज यू विल बी किल्ड इन द वॉर, किल्ड इन द वॉर और किल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, है ना. जिसमें कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसमें कि हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मिसाइल खरीद ली जाएगी, है ना. फाइटर जेट खरीद दिया जाएगा, फाइटर जेट बनाने के लिए कंपनी खड़ी कर दी जाएगी, सरकार उसमें इन्वेस्ट भी कर देगी, है ना. तुम लोग मत पढ़ो, है ना, तुम लोग की इंजीनियरिंग की सीट घटा देंगे, मेडिकल की सीट घटा देंगे, है ना. तुम लोग की वो पेट्रोल और सिलेंडर की सब्सिडी भी घटा देंगे. ना पकौड़े खाओ, ना कहीं जाओ, ना ट्रेन के टिकट के दाम भी बढ़ा देंगे, बिजली के दाम भी बढ़ा देंगे, है ना. 43 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी एसी मत चलाओ, एसी कैसे चलाओगे साले को, मैं लाइट ही बंद कर दूंगा. इन्वर्टर खरीदो 2 लाख का, ठीक है. तो आइदर यू विल गेट किल्ड इन द वॉर, की मिसाइल आएगी बूम बाय बाय, ठीक है, या फिर वॉर की प्रिपरेशन में तुम मर जाओगे, है ना. तो देर आर ओनली 2 चॉइसेस, सिंपल, ठीक है ना. या तो वॉर या फिर वॉर की प्रिपरेशन में मर जाओ, या फिर वॉर को रोकने का जो सही तरीका है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग इनर पीस, है ना, जो कि स्पिरिचुअलिटी, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है ना, डूज एंड डोंट्स वाली नहीं, एक्शंस वाली नहीं, एक्टर वाली, है ना, जिसमें हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि करता कौन है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. फॉर फन, व्हाट्स योर फेवरेट ओपनिंग इन द चेस. आई हैव प्लेड इंग्लिश ओपनिंग ए लॉट, है ना. थोड़ा कैप्रिकॉर्नियस हूँ तो पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग, और इंग्लिश ओपनिंग में मैंने देखा है बहुत सारे वो बन जाते हैं, है ना. और बहुत ही फेवरेट ट्रिक है मेरी इंग्लिश ओपनिंग में, क्वीन कैप्चर कर लेते हो तुम लोग, है ना. क्वीन कैप्चरिंग की एक वीडियो है मेरे चैनल पर, शायद मिल जाएगा. क्वीन कैप्चर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश ओपनिंग में, तो मैंने बहुत मारी है क्वीन, और क्वीन समाप्त हुई नहीं कि आधा मामला इसे ही समाप्त है. और ओवरऑल थोड़ा सा जो वो है ना, इधर से वो तुम्हारा C4 जो है वो D5 को कंट्रोल कर लेता है ना. और फिर जो नाइट है वो भी D5 को कंट्रोल करता है, उधर से तुम बिशप को रख देते हो, तो D5 का कंट्रोल जो कि एक सेंट्रल स्क्वायर है, और वो बहुत जल्दी बन जाता है इंग्लिश ओपनिंग में. शुरुआती 4-5 मूव में वो D5 में तुम्हारा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है ना. और वो बहुत की मतलब उससे तुम्हारा आधा गेम तो इसी निकल जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. और अगर उसके फिर तुम्हारे पास सुपीरियर माइनर पीस वगैरह और स्पेस गेनिंग की अंडरस्टैंडिंग है कि अल्टीमेटली बेसिक्स मजबूत हैं, मतलब एक सेंस में हो तो आधे ही ऐसे सेंट्रलाइजेशन हो गया ना उसमें. लंदन में क्या होता है, लंदन में तुम ऑक्यूपाई करते हो सेंटर को. व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग चेस. लास्ट मई 2024. E4 प्लेयर, सर पे कफन बांध के निकले हैं सनम, तोड़ दूंगा, है ना. E4 में बहुत सारे गैम्बिट्स हैं. इवांस गैम्बिट इज़ अ वेरी गुड गैम्बिट. E4 में तो बस ये है कि, है ना, कफन लेके निकले हैं, है ना. E4 में क्या बोलते हैं उसको, मैक्स लैग्न अटैक, है ना. E4 पूरा इटालियन गेम है ना. वो इतना वो चला था कि उसके बाद फिर उन्होंने सिसिलियन डेवलप कर लिया, है ना. सिसिलियन जानते हो ना, नेपोलियन भी वहीं था, सिसिली गया हुआ था, सो तो इटालियन क्या है उसने ड्रॉप.
हेलो 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 प्राग गुकेश गुकेश ऑब्वियसली गुकेश गुकेश भैया उसको बर्थडे भले जेमिनाई बट फुल कैप्रिकॉर्न है वो उसके लक्षण नहीं देखे हैं पेपर कुर्सी जो बाद में रखता है उसका केवल सनसाइन ही कैप्रिकॉर्न है मैग्नस 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 ऑलवेज मैग्नस मैग्नस इज मैग्नस इकारू इज इकारू इज जेमिनाई मैग्नस ऑलवेज मैग्नस but Gukesh over Magnus certainly no doubt about that Gukesh is born to go beyond Magnus Gukesh Domraju अरे भाई का स्टाइल अलग है भाई का स्टाइल ही अलग है जुदा भाई का स्टाइल जुदा है क्या ग्रेस है क्या कामनेस है अलग है भाई अपने वो गाना नहीं है तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी वो वाला है साइलेंट किलर है मुकेश भाई अपने मैग्नस अल्टीमेटली इज फ्लैशी इन ए सेंस ऑब्वियसली greatest of all time one of the greats of all time no doubt about that but I feel Gukesh will be something else अरे इंडिया वाले जो एलीट है ना वो तुम देख नहीं रहे हो वैभव सूर्यवंशी 14 साल गुकेश 18 साल अब 19 का हो गया है ना सो द नेक्स्ट लेवल डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो है ना जो क्रीम उसको कह लो वो आ रही है वो तो वर्ल्ड डोमिनेटिंग है भैया वर्ल्ड विनिंग नहीं है वर्ल्ड डोमिनेटिंग वर्ल्ड डिमोलिशिंग है जो 10 से 20 वाली उम्र की जो पीक है ना ऐसे कह लो जो 2000 मान लो कि 5 या फिर उसके बाद है ना थोड़ा 2000 के बाद पैदा हुए हैं 1990 वाले नहीं जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था इंडिया में तभी नहीं उसको थोड़ा बाद है ना जिनको इंटरनेट वगैरह और कंप्यूटर वगैरह मिल गए और थोड़ी सी पैसा भी आ गया था खाने पीने की ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई सोन लोग भी थोड़ा सुधर गए थे और फिर उनको कुछ अच्छे गाइड्स भी मिल गए मेंटोर भी मिल गए तो उसमें जो पीक चाहे क्रीम आ रही है भारत से वो देखो एकदम वर्ल्ड डिमोलिशिंग है भैया वो तो हाउ टू स्टार्ट अ बुक इफ़ आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ का मतलब ये है कि लिखो है ना पढ़ो मत फिर पहले लिखो तो लिखने से जब कुछ समझाने की कोशिश करो किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उस प्रक्रिया में तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जब नहीं पता होंगी तो फिर उससे जुड़ा हुआ तुम सीखोगे है ना हमारा ब्रेन जो है चाहे लाइफ जो है उसमें बोलने और सुनने और लिखने और पढ़ने का बैलेंस होना चाहिए तभी तुम सस्टेन बेसिस पे बोल पाओगे फिर लिख पाओगे तो अगर तुम्हारी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम लिखते नहीं हो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तुम किसी को समझाते नहीं हो है ना तो द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच ठीक है तो थोड़ा उस रोल को थोड़ा बड़ा करो ज़िंदगी में ये है प्रक्रिया और बिना लर्निंग के तो फिर एक्सेलेंस हो ही नहीं सकती और लीग भी चेंज नहीं हो गया सो हाउ वाज मैग्नस रिएक्शन व्हेन ही लॉस्ट अगेंस्ट गुकेश इट वाज मतलब वो उसी लाइन पे था ना थोड़ा उसका सेल्फ फ्रस्ट्रेट उसको ऐसा लगा कि है ना ही कुड हैव वन बाकी वो मैग्नस को पता है ना उसने सही रिमार्क दिया बिल्कुल कि गुकेश इज़ ऑन ट्रैक बट ही इज़ नॉट अहेड ऑफ द ट्रैक बिल्कुल सही प्रॉपर एग्जैक्ट जो रिमार्क एग्जैक्ट वो सेंटेंस जो गुकेश को सुनना चाहिए वो उसने बोला और दैट शोज मैग्नस इज़ नो स्मॉल थिंग है ना मैग्नस इज़ नो स्मॉल ऑब्वियसली है ना ही इज़ मैग्नस नो डाउट अबाउट दैट बट गुकेश इज़ गुकेश एज वेल Gukesh peak will be something else. Vivek Rai peak will be something else. Although it's a different matter that what kind of climate change we will be looking in, or we will be playing into cricket. Chess तो चलो फिर भी हो जाएगा. And as far as cricket is concerned, I have very heavy doubts कि किस तरह की climatic conditions होंगी 10-15 साल बाद या फिर even 10 साल बाद, even 5 साल बाद. है ना इट्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो ही सबसे बड़े रिस्क हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अगर तुम पढ़ोगे डू यू बिलीव इन ज़ोडिएक साइन आई डू फील कि साइकोलॉजिकली हमारी टेंडेंसीज उससे उस पर असर पड़ता है ना हाँ आई डू फील कि यू कैन सर्टनली सी इंडिविजुअल्स बिहेविंग इन सर्टेन वेज ठीक है उससे
उनका बर्थडे वर्ड से कितना रिलेशन होता नहीं होता, आई हैव सीन एटलीस्ट, आई हैव सीन इट। और उसमें मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। साइकोलॉजिकली एवरी वन हैव देयर ओन रिदम, देयर ओन टेंडेंसी। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चाहे साइकोलॉजी एज ए फील्ड प्रिडिक्शन के लाइन पे जब वो चलने लगती है ना, तो थोड़ा मुझे लगता है वो एक्चुअली में ये पता है क्यों हो रहा है ना। दो इसके आंसर दे सकता हूँ मैं। एक जो मैंने बहुत पहले देता आया हूँ मुझे लगता है, लेकिन बहुत सही नहीं रहा, और मैं बहुत दूंगा भी नहीं। पहले मैं इस बात का ये जवाब दिया करता था कि देखो समोसा है, समोसे से चाहो तो क्रिकेट खेलने की भी कोशिश कर लो, है ना, बट समोसा खाने के लिए बना है ना। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल आती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो फेंक सकते हो उसको, है ना, फट जाएगा टूट जाएगा बात अलग है। बट बात ये हो रही है ना कि ये सवाल इस तरीके के इसलिए आ रहे हैं, कार्लसन एंड देन फिर है ना जोडियक साइन, जो स्तर है ना नीचे आ रहा है, हम ऊपर नहीं जा रहे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, क्लाइमेट चेंज की तरफ नहीं जा रहे, बट कमिंग डाउन, है ना। वो इसलिए है क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट चीज़ है उसको हम लोगों ने पहले ही बाहर कर रखा है। वी आर नॉट सीरियस काइंड ऑफ इंडिविजुअल, हमें गीता उपनिषद से मतलब नहीं है ना, और ना हम रखेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है अभी, विच आई कैन सी, है ना। नाउ द चॉइस इज़ टू यू, है ना। मैं अपने चुनूँगा कि मुझे कन्वर्सेशन की क्वालिटी किधर खींचना है। जैसे मैंने कहा ना बाबा सूर्यवंशी की बात की, क्रिकेट की बात की, उसके बाद मैंने उसको क्लाइमेट पे कन्वर्ट कर दिया बात, क्योंकि 10 साल बाद वैसा वेदर रहेगा कि नहीं रहेगा कि तुम 5 दिन के टेस्ट मैच खेल पाओ, है ना। वैसे भी तुम अगर नोटिस करो तो पिछले 10 सालों में कई सारे तुम्हें क्रूशल टूर्नामेंट्स में देखोगे बारिश जनरली ज़्यादा मिली है। मैचेस अगर तुमने देखे होंगे 2000 से 2010 वाले, 2010 से 2020 में जो तुमने मैचेस देखे हैं वो, चाहे 2005 से 2015, 2025 में तुमने जो मैचेस देखे होंगे, है ना। आई वॉज इन TMI, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, वॉट एवर इट इज़, बाय, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। दुनिया है गोल, फिर मिलेंगे चलते चलते। हाँ आगे बताओ बाकी लोग। द्वैत में चलती रहती, पेंडुलम घूमता रहता है ना, वन गोज अवे एंड देन वन कम्स बैक, सो आई एम नॉट बॉदर्ड ऑन दैट फ्रंट। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो तस्मात् युद्धाय युज्योस नैवम पावम अवाप्स्यसि। बोलो मिल जाएगा श्लोक, गीता का है। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, इसी तरीके कुछ है, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स है। मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। आई थिंक ये चौथे में है, चौथे में भी नहीं है, दूसरे में होगा। वीतराग भय क्रोध है तो ठीक है। यदा यदा धर्म से बहुत अच्छी बात है। दूसरे में होगा कि तीसरे में भी नहीं होगा, दूसरे में ही होगा। ये श्लोक यहाँ तक अध्याय 2 का है अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। कितना हो गया यार, 1 घंटा हो गया इस समय। नामे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन नावम ना अनवाप्तवम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं यूट्यूब लाइव आता हूँ, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं यूट्यूब लाइव ना आऊँ तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं लाइव ना हूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। मजा आया? इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी थी ना। एक घंटा हो गया है, मैं ज़रूर विश्राम लेना चाहूँगा, बट श्लोक ढूंढ के ही मांगूंगा, नहीं तो कैप्रिकॉन कैसे कहलाऊँगा। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो
बुद्धि युक्त जाति। अरे बेटा कहाँ गए? ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। सो दैट वाज मोर देन इनफ। इट्स अ गुड बाय टू ईच अदर। वी शैल मीट अगेन। बाय।